Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear student, today we are going to start chapter 3 of your material science 1 syllabus, which is based upon imperfections in solids. What imperfections are? You know that in ideal crystalline material, we here are mainly referring to crystalline materials, because in crystalline materials the arrangement is periodic, whereas in amorphous materials the arrangement is non-periodic already. So in perfect crystal or ideal crystals, atoms, ions or molecules are repeating periodicity because they are arranged in a chain of particular order. So any deviation from that particular atoms or ions or molecules in crystals are called imperfections. They are called imperfections. क्रिस्टल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस तरतीब से अरेंज होते हैं, लेकिन इन रियली ये अरेंजमेंट जो होती हैं 100% एक्यूरेट नहीं होती है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ कोताहियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं. उन कोताहियों को, उन कमियों को हम imperfections in solids कहते हैं. These imperfections plays a very vital role in densities, volume, mechanical properties, electrical properties, magnetic properties. So these are of vital importance to be studied. Imperfections in solids are, you can say here we are studying crystals, are mainly of two types. They are point defects and line defects. Point defects, you know that if an atom is deviated from a point, from its normal lattice position to somewhere else a little bit, or completely gone out of the place and left a lattice sites, then it is called point defect. One is line defect. Line defect meaning that if a row of line is being tilted or deviated because of some reasons in a crystals, then we call it line defects. So here we are going to discuss them one by one and you will see. Now come, point defects are zero dimensional defects. You know, in mathematics, whenever we are talking about the point, it is a dimensionless point, meaning that it's too small, its volume is almost negligible, its size is almost negligible. So they are called point defects or dimensional defects. Imperfect region of the order of the size of, look, imperfect regions of the order of size of 1 or 2 atomic diameters in crystals are point defects. You know that the diameter of atom is roughly equal to 10 to the power minus 15 meter. So if the region is imperfect from 10 to the power minus 15 or 2 into 10 to the power minus 15, and so that distorted region, that disturbed region, we can treat it as a point defect. So imperfect region of the size of the order of 1 or 2 atomic diameter in crystals are point defects. They are of two types. Point defects जो हैं vacancies हैं, impurities, interstitial and electronic defects होते हैं. ये देखो, एक होते हैं vacancies होती हैं, इसके अलावा वैकेंसीज हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं, इंटरस्टेशियल हैं और इलेक्ट्रॉनिक हैं. सो दे आर दी
they are coming in the group of the point defect, but mainly they are vacancies and interstitial defect. So the vacancies defect, what are the vacancies? It is clear when an atom or ion or molecule miss its own original point, meaning that leaving the latest point where no atom is there, meaning that when the atom leave that point, so it is left unoccupied, then we call it vacancy. So the vacant or unoccupied side of an atom or ion or molecule in crystal is called vacancy. इसको हम क्या कहते हैं? Vacancy कहते हैं. There is no bonding of vacancies to atoms. Vacancies has no link or relation to atoms bonding. Atoms in the vicinity of the vacancies will be close together and hence distort the crystal symmetry. Whenever there is a vacancy, like three-dimensional break, one is missing in the middle, so the side breaks will try to come to the empty space, and the top and the bottom will come to fill the empty space. Similar is the case with the atom. When there is a vacancy, so the other atom in the surrounding of that vacancy will come close, because they are going to find a space over here, so they will get closer to each other and causing a distortion in the regular periodicity of the crystal. So this is what we call a vacancy defect. This can occur during crystallization, whenever you are crystallizing some material, or due to thermal vibration of atoms at high temperature, meaning that if you give high temperature, the heat will be absorbed and the atom gets sufficient energy to escape from its normal site, leaving the occupied side to be unoccupied. So vacancies, what role does it play? This is very important for your research, that what roles they are playing. Vacancies reduce mechanical strength को reduce कर लेती हैं. They may be Schottky defect or Frankel defect, meaning that we are coming to that one. Schottky defect or Frankel defect जो है, they are the properties of the ionic materials only. So we will discuss it later. So coming to that one, so they may be Schottky defects or Frankel defects. So vacancies can be Schottky and Frankel defects. Schottky defects in ionic compounds, there are anion, which is negative charge, there are cations, which are positive charge. When the positive and negative, meaning that pair of anion and cation leave their places, then we call it a single Schottky defect. Now if two Schottky defect, three Schottky defect, so it means Schottky defect में ये होता है कि अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों एट ए टाइम इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एनायन और कैटायन अपनी जगहों को छोड़ दे और ख़ाली जगह रह जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? Schottky defect कहते हैं. Schottky defect है द डिसलोकेशन ऑफ एटम फ्रॉम ओरिजिनल साइट टू द सर्फेस ऑफ क्रिस्टल. ये सर्फेस पे चले जाते हैं. In ionic crystal, the missing anion and cation pair is Schottky defect. Ionic crystal में क्या होता है? ये बेसिकली होते हैं आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं. पॉइंट वगैरह जो है वो आयनिक में नहीं होते. पॉइंट डिफेक्ट जो है वो आयनिक में नहीं है. ये जो है ये जो Schottky डिफेक्ट है, ये पॉइंट भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है? ये सिर्फ आयनिक मटेरियल में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं. सो इन आयनिक क्रिस्टल द मिसिंग anion and cation pair is Schottky defect. इसको सो द cations and anions pair आर इक्वल टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, यानी चार्ज न्यूट्रलिटी को कांस्टेंट है, यानी स्टाइकोमेट्रिक रेशियोज को क्या रहती है? वो कांस्टेंट होती है, उसमें वो चेंज नहीं होती. यानी उसमें एक स्टाइकोमेट्रिक होती है और एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक होती है. स्टाइकोमेट्रिक में चार्ज न्यूट्रलिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है और वो चेंज नहीं होती. सो दे आर डोमिनेंट इन अल्कलाइन हेलाइड्स. अल्कली हेलाइड्स में ये क्या होते हैं? ये डोमिनेंट हैं. सो दीज आर व्हाट वी कॉल Schottky डिफेक्ट. अच्छा जी, दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल. Schottky डिफेक्ट के बाद फ्रैंकल डिफेक्ट भी आता है. फ्रैंकल डिफेक्ट में ये होता है कि अगर कैटायन अपनी असल जगह को मिस कर दे और किसी
इंटरस्टिशियल जगह पे चली जाए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर बाद में फ्रैंकल पे आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल जो होता है, इंटरस्टिशियल मीनिंग दैट यू नो दैट the solids are not completely occupied. You have studied the packing factor for cubic, for body centered cubic, for face centered cubic, and face centered was the most closely packed, that was 0.74 I think. Yani 74% of the volume was occupied and the rest was unoccupied. So in solid, in crystals there exist unoccupied places. If these unoccupied places are filled by small atoms, that unoccupied place in between or among the atoms, that is called interstitial sites, and usually smaller atom occupy that, and that is what we call interstitial deficiencies or defects कहते हैं. So the normally empty space in crystals occupied by an atom, नॉर्मली जो क्रिस्टल में होता है वो उसको एटम ऑक्यूपाई कर लेता है. सच एटम ऑक्यूपाई वेकेंट पोजीशन बिटवीन एटम्स ऑफ आइडियल क्रिस्टल्स, यानी इन एटम्स के दरमियान जो होता है वेकेंट प्लेसेस भी होते हैं. दिस एटम में भी क्रिस्टल, ये जो है क्रिस्टल डिविएटेड होता है, और फॉरेन एटम भी हो सकता है. जिस तरह बेरियम टाइटेनेट में आप कैल्शियम को इंट्रोड्यूस कर दे तो ये कैल्शियम जो है वो फॉरेन एलिमेंट कहलाएगा. बेरियम की जगह कैल्शियम लेगा तो उसकी साइज़ वगैरह उनमें कुछ फ़र्क होगा, तो उसकी वजह से उसमें या इस तरह कर लेते हैं कि छोटा लिथियम है, लिथियम छोटा वो है, अगर आप किसी बेरियम टाइटेनेट में ऐड करें तो मोस्ट प्रॉबेबली ये होगा कि ये छोटा वाला जो है वो उनके दरमियान जो गैप्स हैं, जो स्पेसेस हैं एटम्स के दरमियान, उनमें चला जाए, तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहता है. सो द एटम्स मे बी क्रिस्टल डिविएटेड और फॉरेन एटम्स, या फॉरेन का मतलब जब बाहर से आ जाते हैं, या क्रिस्टल में डिविएशन होती हैं. दीज एटम्स आर यूजुअली स्मॉलर, ये बहुत छोटे होते हैं. दे काज एटॉमिक डिस्टॉर्शन, ये क्या कर लेते हैं, एटमों को डिस्टोर करते थे बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ द क्रिस्टल. यानी अगर आप देखिए ये हाथ हैं, ये दोनों हाथ हैं, इनके दरमियान कोई मोटी चीज़ आ जाए तो हाथ क्या हो, क्या ऑटोमेटिकली दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यूँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे. इसी तरह जो एटम्स जो हैं उसको दूर दूर करते जाएंगे, और इससे आपके पास क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल क्या होगी, बढ़ेगी, और उससे मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उससे चेंज होंगे, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और मैकेनिकल. तो ये मैंने कहा इन चीज़ों को आपने बेसिकली फ़ोकस करना है. पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि डिफेक्ट्स हैं क्या, फिर आपकी रिसर्च में ये क्या किरदार अदा करते हैं, दैट शुड बी आल्सो केप्ट इन माइंड. इसके बाद अब आ जाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे. फ्रैंकल डिफेक्ट जो होते हैं, ये देखो, आप देखो एनाइन, कैटाइन और एनाइन, यानी एनाइन होता है या कैटाइन हो या एनाइन हो. एन आइन, आइन जनरल, कैटाइन इज़ पॉजिटिव आइन एंड एनाइन इज़ नेगेटिव आइन. ये एन आइन अलग है. ये एनाइन जो है, ये एनाइन का मतलब है कोई भी आइन, ख्वाह वो कैटाइन हो ख्वाह एनाइन हो, ये मिस कर ले. लेकिन मोस्टली चूँकि कैटाइन छोटा होता है साइज़ में एनाइन से, तो कैटाइन जो है वो क्या कर देता है, अपनी जगह को मिस करता है फ्रॉम ओरिजिनल साइड टू इंटरस्टिशियल पोजीशन. दिस डिफेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय सीक्वेंस ऑफ जंप होपिंग, इसको कहते हैं कि एक जगह से जंप दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये होता है. सो दिस डिफेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय सीक्वेंस ऑफ जंप्स ऑफ एटम्स फ्रॉम नॉर्मल टू इंटरस्टिशियल पोजीशन रादर बाय नॉर्मल माइग्रेशन ऑफ एटम. नॉर्मल माइग्रेशन नहीं होती कि एक जगह से एटम माइग्रेट करके दूसरी जगह पे, दूसरी साइड पे चली जाए, तीसरे, ये नहीं होता. ये जंप कर लेता है, और जंपिंग से क्या कर लेता है, वो दरमियान वाली जगह जो होती है, एटमों के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसमें फंस जाता है, और काजिंग imperfection. Cation is generally smaller in size, so most probably will occupy crystal voids. Such defects do not change the overall charge neutrality. ये चार्ज न्यूट्रलिटी को चेंज नहीं करता. ऊपर आपने देखा जो शॉटकी डिफेक्ट थी उसमें मास कम हो रहा था, डेंसिटी कम हो रही थी, बिकॉज जब कैटाइन और एनाइन का वो निकल जाए तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैटाइन इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज़, और ये क्या होता है, विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, यानी एटमों के दरमियान वाली जगहों को जो स्पेसिंग होती है उसको ऑक्यूपाई करेगा मेनली, और ये चार्ज न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्टाइकोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करेगा. सो दे आर मोस्टली फाउंड इन सिल्वर हैलाइड्स. सिल्वर हैलाइड्स में ये आप पीरियोडिक टेबल में चले जाओ, सब आपको पता चल जाएगा. These defects do not affect the density of the crystal as volume remains unchanged. Volume उसमें क्या होता है, unchanged होता है.
शॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर इंट्रिंसिक इन क्रिस्टल, ये वरासती तौर पर पाए जाते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है मौरूसी हैं, ये वरासती प्रॉपर्टी है। ये आप देख रहे हैं शॉटकी डिफेक्ट में, ये रेड जो है कैटायन है जो छोटा होता है साइज़ में, और ये पर्पल जो है ये आपके पास एनायन है। तो यहाँ से एक कैटायन, ये देखो ये कैटायन मिसिंग है और इधर सरफेस पे आ गया है, और इधर एक एनायन मिसिंग है जो कि इधर सरफेस पे आ गया है। सो दैट इज़ कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट, वन पेयर इज़ मिसिंग। और अगर ये दो चले जाते, इधर आते सरफेस पे आ जाते, तो टू शॉटकी डिफेक्ट्स होते, थ्री। इसी तरह फ्रैंकल डिफेक्ट में देखिए एनायन भी, लेकिन मोस्टली इसमें कैटायन मिसिंग होते हैं, क्योंकि कैटायन के लिए। फ्रैंकल डिफेक्ट में ये देखो आपके पास क्या है, कैटायन है, और ये कैटायन क्या कर गया है, भाग गया है, इधर आ गया है। तो डेफिनेटली जब इधर आ गया है तो उसके साइड वाला जो एनायन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। तो इधर जो खाली जगह रही इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल images I have selected for you people, so that is a clear. So one is a pair, missing pair of cation anion, that is Schottky defect, and missing of cation, and that is occupying the interstitial space, that is called Frankel defect. Now come to the effect of impurities. When you may add impurities to the solids or crystal, what role does it play? See, compositional defects and crystals. Compositional defects, meaning that if you add calcium instead of barium to barium titanate, then there is a slight difference of ionic radii between it. So when calcium occupy the some spaces of the barium, so there will be a stretching, there will be stresses developed inside the solids and causing some sort of imperfections. So these are the compositional defects. Sometimes they may be stoichiometric, sometimes they may be non-stoichiometric. Stoichiometric means if the ratio is the same, if you replace 12 barium by 12 calcium, then stoichiometric. If 12 barium by 14, so that is non-stoichiometric, meaning that stoichiometry is being disturbed. So these might be small particles or foreign elements incorporated in crystals, यानी ये small particles होंगे या small elements होंगे जो कि क्या होंगे, incorporated in crystal, जो crystal में हम क्या कर लेते हैं, incorporate का मतलब दे देते हैं. These embedded atoms difference in atomic radii and electronic structure compared to host atoms. Host atoms की जो host है यानी बेरियम टाइटेनेट है, तो बेरियम टाइटेनिया होस्ट है, और उसमें मैं कैल्शियम को ऐड कर रहा हूँ, तो ये कैल्शियम जो है ये फॉरेन एलिमेंट है, बाहर से आया हुआ है. इंग्लैंड में रहने वाले लोग होस्ट कहलाते हैं. मैं उधर चला गया हूँ लीड्स यूनिवर्सिटी में, तो आई वॉज द गेस्ट बेसिकली, मैं फॉरेन एलिमेंट था. सो इन अ सिमिलर फैशन लाइक दैट. तो आ जाते हैं इसमें, हम आते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज़. क्या है? The foreign elements replacing the host elements are called substitutional impurities. जो foreign element है जो host को replace करते हैं उसको substitutional impurity कहते हैं. For example, pure barium titanate है, इसमें आपने कैल्शियम को इनकॉर्पोरेट कर दिया, दोनों की चार्ज सेम है, साइजेस में डिफरेंस, जर्कोनिया को टाइटेनिया से फ़र्ज़ कर रिप्लेस कर दिया, मतलब है केवल डिफरेंट थिंग्स मैं कर रहा हूँ. तो ये आपके पास क्या होंगे, इससे क्या आ जाएगी, इसमें आपके पास आयनिक रेडियाई में तो वो जो क्यूब है वो उसमें क्या होगा, चेंज आ जाएगा. यानी अगर क्यूबिक है वो टेट्रागनल भी हो सकता है, हेक्सागनल भी, यानी इसमें ये चेंज आ जाएगा. उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, पीजियो प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज होगी. तो दिस इज़ द रोल विच इज़ प्लेड बाई इम्परफेक्शंस. समटाइम दे आर गुड एंड समटाइम दे आर बैड. So in pure semiconductors, the doping of pentavalent or trivalent impurities are substitutional impurities. देखो प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, बाहर से कुछ वो मिला लेते हैं उसमें, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट. पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट मिलाने से वो क्या हो जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टी में एब्रप्ट चेंज आ जाती हैं. और आप आजकल देख रहे हो सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन हाउस, फलाना हाउस, जो आपके कंप्यूटर, आपकी CPU, आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर का जो है मेन पार्ट बनाया जाता है, उससे मेन पार्ट बनाया जाता है.
सो इन प्योर सेमीकंडक्टर हम पेंटावेलेंट को ट्राइवेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, जिससे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, कंडक्शन भी चेंज हो जाती है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है, अ लॉट ऑफ more properties. Come to the interstitial impurities. The induction of small size atoms into crystal that fill up the crystal voids. एक तो हमने interstitial वो किया था ना कि वहाँ पर voids होते हैं, खाली जगह होते हैं, अगर कोई एटम अपने आप से मिस करे, क्रिस्टल के अंदर मिस करे और उसमें स्लिप हो जाए। यहाँ पर ये कि अगर हम फॉरेन एलिमेंट मिला दें उसमें, ये भी इंटरस्टिशियल में वो भी आता है, लेकिन ये इसमें फॉरेन एलिमेंट ने मिला दिया आपने, वो साइज़ में छोटा है। अगर वो साइज़ में छोटा है तो वो मोस्टली होस्ट एटम की जगह नहीं लेगा, वो होस्ट एटम के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस है, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस, ये देखो ये फिल करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो कार्बन जो है जिसका रेडियस ये है 0.00777 नैनोमीटर है, और अगर एम्बेडेड इनटू आयरन ऑफ आर, रेडियस आयरन जो है 0.225 नैनोमीटर उसमें मिला दे तो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक रेडियस बहुत कम है कंपेयर टू आयरन। सो ये देखो ये कार्बन है, ये आयरन है, आयरन के बड़े बड़े वो नज़र आ रहे हैं, तो ये कार्बन जो है इसकी जगह को रिप्लेस नहीं करे, बल्कि ये कार्बन एटम सारे इधर आ जाएंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इससे आपके पास स्टील वगैरह ये चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। सो द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टफनेस एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग चेंज्ड. Along with that you can go for the electrical properties as well as magnetic properties. So now come to electronic defect, that is what we call charge defect कहता है, that is what we call charge defects. The charge distribution error in solids, इसको electronic वो कहता है defect कहते हैं. Now these defects move freely in solids when subjected to electric field. When you apply electric field to crystals or solids, तो ये डिफेक्ट जो है वो क्या करते हैं, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इन जिंक ऑक्साइड ZnO, द जिंक ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स लीडिंग टू द लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक, सपोज at some places zinc is missing, then such places have the capability of gaining negative charges. zinc बाज़ जगहों पे मिसिंग है तो कैपेबिलिटी ये है कि बास पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो उस जगह को क्या कर लें, ले लें, बिकॉज दीज होल्स हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस टू इटसेल्फ, मीनिंग दैट द वैकेंसी फिल करने के लिए दी thus a vacancy or interstitial impairment may be produced in excess or deficiency of positive or negative charges by charge imbalance. this इसको हम क्या कहते हैं, non stoichiometric उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, we call it a non stoichiometric जो है डिफेक्ट्स जो होती हैं, जो कि चार्ज इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं. सो these were a little bit about the impurities. We are going to come to other impurities. उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है वो भी हम करेंगे. Although I have cleared everything in my lecture, but for your more simplicity I am going to display a short video about the point defects, and I am going to motivate you people to see details videos. Good lectures of MIT are always there, so go on to it, because we have got a very limited time in this pandemic situation. So I am a little bit brief as well as quicker, because we have to cover our course, and it's your duty to watch the details of these lectures. So now see, let us display the video. Imperfections in solids. Crystalline solid state is characterized by a three-dimensional periodic arrangement of atoms or ions or molecules in space. Ideally, there should be a perfect order in this arrangement. However,
Crystals in nature are not perfect. They do not possess perfectly ordered arrangement. This is due to the presence of few impurities or due to dislocation of few of constituent particles from their normal positions. Any deviation from the perfectly ordered arrangement of atoms or ions or molecules in crystal is called imperfection or defect. Defects can be classified into two types: point defects, line defects, point defects. Point defect can be defined as the irregularities or deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystal. Line defects. Line defects are defined as irregularities or deviations from ideal arrangement in entire row of lattice points. In this chapter, we will learn only about point defects. The point defects can be further classified into stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, impurity defects. Stoichiometric defects. If imperfections in a crystal are such that the ratio between the cations and anions remains the same as represented by molecular formula, the defect is called stoichiometric defect. These defects are also called thermodynamic defect or intrinsic defect. The stoichiometric defects are of two types: vacancy defect, interstitial defect. Vacancy defect. In a crystalline solid, some of the lattice sites are vacant. The crystal is said to have vacancy defect. This generally arises due to the absorption of heat from the surroundings, which results in the decrease in the density of the substance. Interstitial defect. Interstitial defect is caused when some of the constituent particles, can be atoms, molecules or ions, are present in the vacant spaces in the crystal structure. These vacant spaces are known as interstitial sites, and the particles present in these vacancies are known as interstitials. As the number of particles within the crystal increases, the density of a substance increases. Both vacancy defect and interstitial defects are generally shown by non-ionic solids. Ionic solids do not show these simple vacancy defect and interstitial defects. Instead, they show Schottky and Frankel defects. Schottky defects. Schottky defect is similar to vacancy defects. This type of defect is created when equal number of positive ion and negative ions are missing from their lattice sites, so that electrical neutrality is maintained. Here, mass decreases while volume remains the same. Presence of a large number of Schottky defect site lowers the density of the solid. Types of compounds exhibiting Schottky defects. Schottky defect is shown by highly ionic compounds which have high coordination number and small difference in the cations and anions. A few examples of ionic compounds exhibiting Schottky defect are NaCl, KCl, KBr, AgBr and CSCl. Sodium chloride, potassium chloride. Schottky defects maintain the electrical neutrality of the crystal. In sodium chloride, there are about 10 raised to 22 ions in 1 cubic centimeter of sodium chloride.
and there are approximately 10 raised to 6 Schottky pairs per cubic centimeter at room temperature. Therefore, in sodium chloride at room temperature, there is 1 Schottky defect per 10 raised to 16 ions. Frankel defect. If in an ionic solid, a smaller ion, generally cations, goes missing from their lattice site and occupies the interstitial site such that electrical neutrality as well as the stoichiometry of the compound are maintained, this type of dislocation is called Frankel defect and also called as dislocation defect. This defect is a combination of vacancy defect and interstitial defect. It is a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. Since no ions are missing from the crystal as a whole, Frankel defects do not affect the density. Frankel defects are common in ionic compounds which have low coordination number and large difference in size between cations and anions. Frankel defects are found in silver halides due to the small size of silver ion and in zinc sulfide due to small size of zinc ion. In pure alkali halides, Frankel defects are not observed because the ions are bigger than the voids. Impurity defects. So far, we have discussed point defects where there are no foreign atoms. Foreign atoms can occupy interstitial sites or lattice sites in a crystal. Defects in the ionic solids may be introduced by adding impurity ions. If the impurity ions are in a different valence state from that of the host ions, vacancies are created. Let us understand with the help of an example. Consider the crystallization of molten sodium chloride in presence of small amount of strontium chloride, SrCl2. During crystallization process, some of the sodium ions are replaced by strontium ions, Sr plus 2. For every Sr2 plus ion, 2 Na plus ions are removed to maintain electrical neutrality and also creates a cationic vacancy. Similar type of defect and behavior is observed when CdCl2 is added to AgCl.